Hello students, welcome in my channel Amazing Chem Path. So student, in the last lecture we are discuss the IUPAC name system of the organic compound, and in that first rule we are studied regarding the selection of the longest chain, how we have to select. Second rule we are studied about the substituent, when the substituent is present on the parent chain, then how we have to give the priority to the substituent, that we have already discussed. In this lecture student, we are going to proceed the further part of this topic and the rule number 3 of the IUPAC. So we are going to discuss here rule number 3 of the IUPAC, very important rule. Let us discuss rule number 3. So what is the rule number 3 of IUPAC to give the organic compound? So rule number 3 is regarding functional group and substituent. Regarding functional group and substituent. So this rule tells us that regarding the functional group and regarding the substituent, means what student? If in our parent chain, if the functional groups and the substituent both are present, okay, so if both the substituent as well as the functional groups both are present in the parent chain, at that times how we have to give the numbering on the parent chain, correct? So this is the question in front of us. So as per the rule, if the functional groups and the substituents are present on the parent chain, we have to give the priority to the functional group. Keep in your mind. So this is very important. Priority to functional group. Keep in your mind. Priority to functional group. Very important. So this is very important statement, student. So where to give the priority? So priority to the functional group means what? In the functional group we have to get the lowest possible number, understand? So when we are going to discuss with example, you will clear about this particular rule. So very important rule is there. So keep in your mind, if the functional group and substituent present, give the priority to the functional group in such a way that functional group get the lowest possible number or smallest possible number. So let us take with the example, very important rule. So I am going to draw the structure of to understand this rule. So first examples we are going to discuss here. So CH3, CH, CH2, CH and CH3. Okay, so here I am going to attach with one OH group, and here I am going to attach with the CH3 group. So very important student, concentrate here so that you will be understand this rule very properly. So firstly, the rule, as per the rule number 1, select the longest continuous chain. So we are selecting the longest chain. It is a straight chain. Obviously this chain is the parent chain for us. This is the first rule. Second rule, as per the substituent, is any substituent present? Yes. So here the substituent is the CS3, correct? So I will write here, this is the substituent. Then what is this OH? This OH is the functional group. Keep in your mind, this is the functional group, understand? This is the functional group. Now student, as per the rule, we are discuss how we have to give the numbering. So numbering will be start in such a way that functional group get the smallest possible number. So functional group get the smallest possible number. So we are having the two ways.
how we have give the numbering. So numbering I will just show you to you. Just check it. So numbering will be start from this way as well as from this way also. So if you are going to start from this way, 1 2 3 4 5, correct? This is one way. Second way, downside way, 1 2 3 4 5. Now very carefully you have to see here, which is very important, student. So functional group, now see, this is substituent and this is functional group. So as per the rule we have to get the lowest possible number to the functional group as per the rule, correct? So see, if you are going from above sides, means from the top side numbering, the functional group is on the carbon number 4, correct? While if you are going from downside, functional group numbering is on the carbon number 2. See very carefully, I am circling there. So which is the correct path? That is very important. Now correct path is where you will getting the lowest number for the functional group. Forget about substituent now. Substituent is there. Some students are confusing. Substituent having the number 2. Forget about substituent. We are focusing on functional group. Understand? So if the functional groups get the lowest possible number, you have to give the priority in that way. This is very important. So some students confusing, sir, substituents is coming low. Forget about substituent now. We are focusing on functional group. You have to bring the functional group lowest possible number. So see here where the lowest possible number is coming for the functional group. So position number 2 is the lowest possible number, because if you are going from top way, then there is the number 4. So 4 is bigger number, so 2 is smaller number. So which is the correct way? Correct way is the this way. So I am showing by arrow, this is the correct way numbering of the chain. So 1 2 3 4 5 on the 2 number carbon you will get the substituent. So this is the correct way. Understand, this is the wrong way I am showing you, correct? So keep in your mind that very important technique is there. So if we are following this such a type of rules, definitely it will be helpful to give the name for the organic compounds. So this is one of the important rule. When the substituent and the functional groups are present, you have to give the numbering in such a way that functional group get the smallest possible number. Understand everybody? Very important. समझ में आ रहा है बच्चों आपके? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आयु पैक का रूल नंबर 3 है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको अभी मैंने बताया है। तो जब भी बच्चों आपके पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट के साथ में फंक्शनल ग्रुप आएगा, तब आपको याद रखना है कि आपको प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, रूल है। और फिर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, अभी एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि दो हमने वे से नंबरिंग दिए है। एक तो टॉप नंबरिंग से किए है और नीचे से एक नंबरिंग किए है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है OH फंक्शनल ग्रुप है आपका, और CS से सब्स्टिट्यूएंट है। तो OH को स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए, जो कि वो फंक्शनल ग्रुप है। अंडरस्टैंड? तो रूल में हमें यही पता है कि फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए। तो हमने फिर दोनों साइड से नंबरिंग किए, तो हमें पता चला कि अब ऊपर के साइड्स में से नंबरिंग किए टॉप साइड से, तो हमें 4 नंबर पे वो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और नीचे के साइड से नंबरिंग किए तो 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो उससे हमें पता चला कि 2 नंबर वाला सही है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर है। 2 नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें प्रॉपर वे जो जाने का है और जो हमें नंबरिंग देने का है चेन पे, तो वो होगा आपका नीचे वाला नंबरिंग, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप 2 पे आता है। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि वो बोलते हैं सर सब्स्टिट्यूएंट को भी 2 ही उधर से किया तो 2। लेकिन बच्चों मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, हमें ऐसे एग्जाम्पल में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है। सब्स्टिट्यूएंट्स आप थोड़ा सा बाजू में रखना है, ठीक है? हाँ, जब सब्स्टिट्यूएंट इससे अकेला रहेगा तो आपको फिर सब्स्टिट्यूएंट को ही फोकस करना है, जो हमने रूल नंबर 2 में देखा था। लेकिन ये रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ में रहेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देने हैं। ये क्लियर कट हो गया आपका? क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे रूल पे आते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैंने आपको
अभी क्लियर कर दिया है एग्जाम्पल के साथ में। याद रखना है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, और प्रायोरिटी देते वक्त उसको नंबरिंग ऐसे करना है कि उसका नंबरिंग स्मॉलेस्ट भी आना चाहिए। याद रहेगा अभी सबको, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको पता चला होगा। तो बच्चों ऐसे ही अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैंने आपको मेरा मकसद बता दिया है कि ये अपना एक ही मकसद है, ये अच्छे अच्छे वीडियो अपने गांव के छोटे छोटे शहरों में जाना चाहिए, लोगों को इसका, बच्चों को इसका हेल्प होना चाहिए। जो कि आप अच्छा काम कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके लोगों तक पहुंचा रहे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।